This is a great initiative by University of Central Punjab and Center for Professional Excellence to bring up all the public health seniors, the people who have contributed a lot towards the betterment of the healthcare system of Pakistan. Ali Khan, sir, please, sir, if you could introduce yourself, sir. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shehzad. I'm a graduate of King Edward Medical College, Lahore. After my medical graduation, I joined service in Punjab, and then I did my MBA with majors in finance, and then MSc in public health and PhD in management sciences. I shifted to Health Services Academy as an assistant professor in the teaching area after doing 15 years of clinical and administrative experience in Punjab. So I joined here in 2008, and since then I am teaching and doing research and capacity building in Health Services Academy, which is a federal public health institute. It is connected with all the provincial health services academies and institutes of public health like IPH Lahore, IPH Quetta, PHSA Peshawar. Currently, I am the Dean of Public Health as well as I am the Vice Chancellor of Health Services Academy, which is now a university since 2018. And we are also undertaking a lot of management courses and economics and planning and policy, different courses at the federal level. Thanks. Thank you very much. Sorry to start. Initially, we did it under the cover of NUST. About a year back, we trained about 13 doctors, which have all succeeded and they have been granted. So we have some questions which we gathered during a little research for this program. Could you please tell us that what is hospital management, and can you highlight some components in hospital management system, please? Hospital management is basically, it is required for the managers who want to do the management of the hospitals, which in our setup are varying from a small hospital consisting of about 50 beds to mega hospitals, which are more than 2,000 even. So in our sector, we divide them into primary, secondary, and tertiary care hospitals, providing different level of services. And to manage all the different hospitals of different level, we need different expertise. Actually, frankly speaking, hospital management is a new emerging, you can say, specialty. It was never felt to be very important, and anybody who is a doctor naturally by profession and who is the head of even medicine or surgery, traditionally we used to have professors as MS of Mayo hospitals even, but they were not trained on management. Management is since an upcoming science, so it is a specialized, you can say, a specialty for which we need a specialized training. We, in this particular course, have divided the hospital management into 5 different modules. First of all, we're covering the introduction and its role. It's very important that we should understand, you can say, the anatomy of the hospital as well as the physiology, which is the functional part. So, and then the hospital manager needs to have a detailed knowledge about the different hospital specialized services which are important in the hospitals. Then he needs to be an expert regarding the running of different hospitals support services. Then we always say that hospital, of course, it's a service providing organization. It's a specialized one because high-tech people work there. And so to manage all those high-tech equipment and even the HR, it requires specialized training for that. And a manager needs to be since he's going to manage the hospital, he's going to head the institution, he needs to learn how to lead. He should have leadership qualities, he should have communication qualities, and so decision-making qualities. And naturally, he needs to develop the things because everybody is an expert in that. So it is a specialized organization with special needs, special requirements, and special tools to train them. And then, naturally, when he is heading the hospital is providing services to a particular drainage community area. So what is our health system in Pakistan?
And so we need to impart, while we imparting training to the hospital manager, we need to update him about the various indicators, health indicators of Pakistan. What about this? How he's used to use different statistical tools? How he's going to use his data, like HMS, Hospital Management Information System. So in a nutshell, then again, the upcoming subjects, which are total quality management, how to improve how to conduct the medical audit. And since the different ideas which are coming up into provision of services under a health service package, and to fulfill the M.S.P.H, which is minimum service delivery standards. To implement all this, he needs to be trained on all these. So this is how we are planning to launch this particular course, which I think would be very, very fruitful, not only for the public sector, but it is also going to be for the private sector as well, because in Punjab specifically, now it's also in Sindh and KPK, the Punjab Healthcare Commissions are coming up, which are controlling the private practice of the hospitals. So for that, to head that institution, whether it's from the public sector or it's from the private sector, he needs to have a formal training. Sir, thank you very much, sir. Sir, anything, Dr. Zia Ullah, would you like to? Yes, sir. I would like to add in this that management is actually a generalized definition to get the things done by your subordinates, by using the resources efficiently and effectively. Sure. Management is actually needed for all organizations, including healthcare organizations, because without management, everything will be haphazard. Actually, it is planning, organizing, leading, and controlling the organization. And you know, all these four management functions is actually management. But Henry Fayol was a person who is considered a father of modern management. He actually at that time, he suggested that there are 5 management functions and 14 principles of management. But later on, these 5 functions reduced to 4 that are planning, organizing, leading, and controlling. And he was the person who gave administration to the top level management. So top level management is usually called administration, and then there is middle level management and lower level management. Top level management, those people are highly educated and top managers, having, of course, leadership qualities, and they make policies. Lower down in the middle level is the process, how to implement the strategic planning made by the top level management, and then lower level management is actually implementation team. For management and for management of hospitals of Pakistan, you must have leadership qualities. Leaders are also managers, but they are superior managers. And actually the qualities of a leader is that he is honest, trustworthy. He actually passes time with his subordinates. He solves the problems of subordinates, resolves their conflicts. And as a result of that, those people follow them, follow the leaders, and the leaders can get the things done in a very proper way and early. So to steer our health department to a bright future, we must have a good management, a good governance, and leadership qualities at top level, at least at top level, to steer our health department to a bright future. And moreover, when there is better management, you can control all the corrupt practices which are going on
in any system. When there is not good management, when there is not good governance, the finances which are given to an organization, they are wasted because of corrupt practices. So management is necessary at all levels of healthcare, along with accountability to improve the things. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your views, Dr. Zia Ullah. I'll just ask another question which came to us for this specific program which the University of Central Punjab is offering, and the starting date of the diploma is going to be 12th February, and it's going to the registration is going to last for 25th of February. So there's a question, they say that which kind of tools and techniques will be used for the specific programs for this specific hospital management diploma, sir? Let me explain it to you. Actually, the last time when we delivered this course under the NUST, it was originally for 6 months, designed for 6 months, which consisted of 4 months class training and 2 months research. But we had discussions with the Healthcare Commission. Naturally, they are the one who regulate the service delivery, whether it is being imparted in the public sector and the private sector, since we are focusing on both of these sectors. So they wanted that this particular course should, the length of this course should be a little bit increased. So now we are going to have it for 6 months duration will be teaching, and 3 months will be research, because I personally feel that a hospital manager should be well aware of conducting a research as well, how to handle the data as well. Now, as far as the teaching is concerned, the classroom teaching is concerned, it's not only limited to classroom, only the lecture part. We will be giving the assignments as well, which will be both on individual basis as well as in the group form. So they will be conducting the assignments. Then, because naturally, as you know, that there will be some participants who will be attending these lectures online. So naturally, we'll be to gain their more involvement, we'll be giving them the assignments as well. Besides, we will be designing to take them to the hospitals, like you have the attached hospital in the form of doctor's hospital. So we would like to arrange visits to doctor's hospital so that they should learn their SOPs, how they are performing it. So that will increase the learning. Besides only to pay the visits to the private sector hospitals, we will be also arranging visits to all the different level of hospitals in the public sector, starting from the basic health unit, rural health centers, even the seal headquarter hospitals, and some district headquarter hospitals. So they'll be looking into different levels of where the different services are being provided, not only the primary, secondary, as well as the tertiary. And then we are also planning to invite some of our leading guests as personalities, as guest speakers who have wide experience in the hospital. And so nutshell, this particular, course that has been designed in a way where we'll be involving all the different methodologies which are being used nowadays. Besides, yes, we would be involving the IT experts as well, because we have to train them on hospital management information system as well. So this nutshell, this will be quite a comprehensive course that we have already designed. Assalamu alaikum. Thank you, Zafar Saab, and thank you, Zia Saab. And it was really nice to have Zia Saab with us. I have heard about him a lot because I traveled to Lahore a lot. I worked with Punjab Health Department on many initiatives. इसके अलावा जो हमारा अच्छा शहजाद सलीम, मैं उर्दू में बोल सकता हूँ बिकॉज योर ऑडियंस तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी है ना, तो मुझे जरा दिल की बातें करनी हो तो मैं उर्दू में बोलता हूँ, बल्कि बहुत ही दिल की बातें करनी है तो मैं पंजाबी च गल करांगा फिर, क्योंकि लाहौर दा पढ़िया ते ठीक है ना। किंग एडवर्ड च ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਲ ਰੋਡ ਚੌਕ ਤੇ ਮੈਕਲੋਡ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਏ ਸ਼ਾਏ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ अच्छा Zafar Saab, it was very good to know that UCP is starting this program. मैं आपको 2-3 बातें करूंगा जिसकी वजह से शायद आपके प्रोग्राम की एक इम्पोर्टेंस जो है वो मजीद बढ़ जाएगी।
आप एक बात नोट करें कि हमें एज ए डॉक्टर, मैं चूंकि मैनेजमेंट साइड से हूं और जिया साहब भी मैनेजमेंट में हैं और किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये इस बात को समझेंगे कि हमें पूरे 5 साल मेडिकल कॉलेज में एक दफा मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती, और हमें M.B.B.S करने के बाद लगाया जाता है BHU का इंचार्ज, विच इज ए मैनेजमेंट पोजीशन। मेरे ख्याल में इनके हॉस्पिटल के MS से ज्यादा मुश्किल पोजीशन है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हाउस जॉब करके किसी 3rd क्लास BHU में जाके MO की ड्यूटी करना, जहां का वडेरा, जहां का कोई बड़ा बदमाश जो है वो मेडिको लीगल केस भी लेके आए आपके पास, और आपके पास उल्टे सीधे केसेस लेके आए, एंड यू हैव नो आइडिया ऑफ प्राइमरी केयर एंड यू हैव नो आइडिया ऑफ एनीथिंग मैनेजमेंट। उसके बाद फिर आप तरक्की करते हैं या स्पेशलाइजेशन करते हैं या सीनियर मेडिकल अफसर बनते हैं, एंड यू मूव इनटू अ लाइन, IPH से आपने कर लिया DPH और आजकल MPH होता है। वो चीजें इवन MPH में सर मैनेजमेंट कोई नहीं पढ़ाई जाती। मैं पढ़ाता हूँ MPH, एक कोई 2 हफ्ते का कोर्स है हमारा कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जिसमें शायद एक दिन हम इनको मैनेजमेंट पढ़ाते होंगे, और वो भी ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनका ज़हन ही नहीं बना होता। जो पाकिस्तान के हेल्थ इंडिकेटर हैं और जो पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम का सारा बेड़ा गर्क हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये रीजन नहीं है कि डॉक्टर नहीं है या दवाई नहीं है या अस्पताल अच्छे नहीं है, सब कुछ है, मैनेजर नहीं है। जिस जगह पे अच्छा मैनेजर है, सरकारी अस्पताल ही पाकिस्तान का सबसे अच्छा अस्पताल है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कई अस्पतालों की, ज़िया साहब बेहतर जानते होंगे। तो आप ये देखें कि जब आप किसी अच्छे मैनेजर को कोई इंस्टीट्यूट देते हैं और अच्छे डॉक्टर को, तो वो उसको डिलीवर करके दिखाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि डॉक्टर को आप मैनेजमेंट का कोर्स करा के, ट्रेनिंग करवा के उसको मैनेजमेंट में करा दें। दिस इज मच मच इजियर देन मेकिंग सम मैनेजर अ मेडिकल केयर प्रोवाइडर। तो अगर किसी मैनेजर को ला के मैंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनाना है, वो तो इम्पॉसिबल है। मैं किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी टेक्नोक्रेट को, नॉन मेडिकल के बंदे को ला के अस्पताल का चीफ एग्जीक्यूटिव बना देता हूँ, उसको तो अलिफ बे नहीं पता, उसको कितना को पढ़ा लेंगे आप मेडिसिन, नहीं पढ़ सकते। सो मेरे ख्याल में the future of Pakistan health system is improving the management capacity of health managers in Pakistan, starting from the basic health units, आपके RSC, आपके THQs, second DHQs। अभी क्या मसला है आपके पाकिस्तान के, पंजाब के खास तौर पे सेकेंडरी केयर तो फंक्शनली नहीं है। देयर इज नो सेकेंडरी केयर, देयर इज अ प्राइमरी केयर एंड देन देयर इज अ टर्शरी केयर। सेकेंडरी लेवल तो बना हुआ है रेफरल सेंटर। जितने भी आपके लाहौर के इर्द गिर्द के अस्पताल हैं, वो DHQ में जाता है स्पेशलिस्ट के पास, FCPS के पास, और वहां से रेफर होके आता है मेयो में, LGH में, या गंगाराम में, या लेडी विलिंगटन में हॉस्पिटल, और वहां पे PG देखता है उसको। तो एक FCPS का रेफर किया हुआ केस हाउस अफसर देखता है टर्शरी केयर में। ये कौन सा निजाम है दुनिया का कि आप एक क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट के बंदे को रेफर करें और वो पेशेंट रेफर करे और वो जाए टर्शरी केयर में जहां पे हाउस अफसर उसको डील करे, जिसको पता ही कुछ नहीं है। सो ये तो बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। अभी जो MTI आई है, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा टाइम है। इट्स एन एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग बिकॉज MTI इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो अबाउट MTI. I had evaluated and I have worked in KP on MTI. 99% of the people in Punjab, they have no idea about MTI. उनको पता ही नहीं है MTI क्या है। बस उनको ये पता है जी सिविल सर्विस साड़ी मुक जानी है, साड़ी सब पक्की नौकरी साड़ी खत्म हो जानी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। There are choices, there are so many options which one can take. So there is a very importance, a very important need for making people understand not only about this MTI but also the management concepts. दुनिया में जितने भी तरक्की हुई है इदारों में, जो भी इदारा देख लें आप, वो एक बंदे ने तब्दीली लाई है जाके। स्टीव जॉब्स आया था, एप्पल कहां से कहां पहुंच गया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, ये जो भी इंडियन है आपका गूगल में गया, गूगल कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है ना। इसी तरह ये जेफ बेजोस है, या आपका जो ये जो आपका अमेजॉन का और बाकी सबका। सो ये आप सोचें कि हर चीज के पीछे एक मैनेजर होता है। इंस्टीट्यूशन जो फेल होती है ना, वो इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होता, मैनेजर फेल होता है। इंस्टीट्यूशन कामयाब नहीं होता, मैनेजर कामयाब होता है। और मैनेजर एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर शायद कुछ जगहों पे एक बंदा हो, लेकिन कहीं पे मैनेजमेंट की एक टीम होती है। सो अगर ज़िया साहब अपने किसी हॉस्पिटल में एक टीम बना लेते हैं और कल को ये वहां से रिटायर भी हो जाते हैं, तो पीछे काम चलता रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट की रिफॉर्म्स नहीं आई, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक कोई इन जैसा नहीं बनने की खुद कोशिश करेगा नहीं बन सकता। So we need to create a system in which we can replicate some of the clones of all of you guys. Zafar Ikram साहब जैसे, सलीम शहजाद जैसे, ज़िया साहब जैसे, ये हमारे खिलजी साहब जैसे। तो ये आप देखें कि there has to be a structured program, human resource development हो, proper किस्म की structured program हो, जिसके अंदर मेडिकल डॉक्टर्स को मैनेजमेंट का। और एक बात और ध्यान में रखें,
आप कह रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होती है जी, जिधर भी आप अप्लाई करेंगे मैनेजमेंट का मतलब वही रहेगा। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई फर्क मैनेजमेंट पढ़ानी पड़ेगी। वी कैन बी टॉट मैनेजमेंट बाय वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट गुरुज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। ब्रिंग दोज इन और उनसे कहें यार आप मुझे बताएं कि आपका तो फॉर प्रॉफिट सेक्टर है, अगर फॉर प्रॉफिट सेक्टर ना हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, तो फिर क्या होगा? सो मेरे ख्याल में this is the way forward. We need management trainings, and it has to be a blended training. It has to be mostly on the weekends or in the evenings, because the people in Pakistan now, they cannot leave their job. मैं आज अपनी जॉब छोड़ूं ना, तो जितना मर्जी मैं तुरम खान हूं ना, मेरे पीछे 10 बंदे खड़े हैं मेरी सीट लेने के लिए, और फिर मैं दोबारा आऊंगा तो मैं लाइन में लगूंगा सबसे पीछे। तो कोई शख्स भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। आप इसको शॉर्ट टर्म करें, इंटरमीडिएट करें, वीकेंड्स पे करें, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाएं जो दुनिया में होता है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है MS का PhD का कि जिसके अंदर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे बुढ़ापे में जाके इस तरह करते हैं। बड़े रेयर इस तरह के कम होते हैं प्रोग्राम। PhDs हो सकती हैं, बट कैपेसिटी बिल्डिंग, CPD और CMD जो है, CME जो है। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल मेरी मीटिंग हुई थी PMC के जो प्रेसिडेंट है हमारे तकी साहब, ही इज ऑफ द व्यू कि हम CPD और CMEs को रिवाइव करें रिन्यूअल के लिए, PMC के लाइसेंस के लिए। उसमें ये भी आप जो करवा रहे हैं UCP इमीडिएटली मेडिकल यूनिवर्सिटी से या HSA के साथ इल्हाक करके ये अप्लाई करें PMC में, इसकी CME क्रेडिट लें, CPD क्रेडिट लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? ओवर टू यू जफर साहब, थैंक यू। Welcome, Dr. Sabahat. Dr. Sabahat, as Dr. Zafar has told us that she's a senior dental surgeon from Minister Institute of Dentistry, Multan, and she had the honor of getting the first position in the badge of Diploma in Hospital Management. So would you like to share your views about the diploma and how you went through it and how you scored the top position, ma'am? I'm Dr. Sabahat from NID Multan. And it was a very, very good experience for me to attend this course at Lahore. And our teacher, Dr. Zafar Ikram, he actually जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा और हमें इस तरीके से मैनेजमेंट को बताया कि हमें वाकईतन मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। बावजूद इसके कि मुझे हर हफ्ते ट्रैवल करके जाना होता था मुल्तान से और मुश्किल होती थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे मतलब इतना अच्छा लगा ये कोर्स कि मुझे इसका ऑड नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था जाना। और इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपका इसको कहीं नहीं भी काम आ रहा, आप मैनेजमेंट में नहीं भी जा रहे, तो लेकिन आप किसी के अंडर तो हैं ना, तो आपको सारे रूल्स तो पता होने चाहिए ना कि हम पे जो रूल अप्लाई हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम either we are doing management or not, but this is beneficial for us to know all the rules. अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम पे जो मैनेजमेंट जो हम पे रूल कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। तो मुझे इसका एज सबऑर्डिनेट भी बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बहुत फायदा हुआ। Thank you, ma'am. Thank you so much. And ma'am, one more thing, ma'am, can you put some light on the learning outcomes you had through this course? कि आपने इस कोर्स से क्या खास सीखा, कुछ जो कि आपने अपनी प्रीवियस डिग्री में नहीं सीखा, मैम? जी, इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे फील हुआ वो ये है कि हम जिस वक्त किसी भी एडमिन रजिस्ट्रार बनते हैं, जो कि मैं 10 साल से रह चुकी हूँ और हूँ, तो उसमें आपका मतलब क्या इसके जो गवर्नमेंट रूल्स क्या हैं, आपकी मेडिसिन की स्टोरेज के, आपके इंडेंट एक्सपेंस के, तो वो मुझे बहुत फायदा दिया इस कोर्स के में। जी जी, थैंक हाँ यू जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अली खान साहब ने जो बात की है मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। जी सर। जिस तरह मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा अप्रेज किया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक नई इमर्जिंग स्पेशलिटी है हमारे पब्लिक सेक्टर में। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो लाहौर में वाक़या है, इसमें मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को शुरू हुए अभी 12 या 13 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा
पुराना नहीं है, लेकिन वहां पे एडमिशन जो है वो लिमिटेड है पब्लिक सेक्टर के डॉक्टर्स के लिए। इट इज नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ओपन है। मिनिमम मैं मानता हूँ थोड़ी सी मिनिमम है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी ऑफर करा रही है, लेकिन हमने पहले जैसा नर्स के साथ किया, अब हम यूसीपी के साथ करना चाह रहे हैं। उसकी बिहाइंड देयर आर वन और टू रीजंस एज वेल, बिकॉज यूसीपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है अक्रॉस पाकिस्तान, आई वुड से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इस्लामाबाद। सो जो डॉक्टर आजम ने बात की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बेहतर यूज कर सकते हैं। वी कैन देखें, जैसे आप डॉक्टर सबाहत मुल्तान से आके ट्रैवल करके लाहौर आती थी, तो व्हाई नॉट वी कैन हैव इट द ट्रेनिंग इन मुल्तान, ताकि बावलपुर से लोग आए, रेमिया खान से लोग आए, डेरा गाजी खान से आ सकते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आ सकते हैं। मुल्तान इज ए वेरी सेंट्रल प्लेस। इसी तरह वी कैन हैव इट इन फैसलाबाद एज वेल। हमारे पास वो जो 2 डॉक्टर साहबान लइये से आते रहे हैं, वी कैन डू दैट। ये चूंकि एक इमर्जिंग हॉस्पिटल स्पेशलिटी है, इसकी वक्त के साथ साथ अब इसकी यूज जो है या अफादियत जो है उसका ये एक थोड़ा मतलब वो अब समझा जा रहा है, फील किया जा रहा है। बिकॉज इसी पर्टिकुलर ग्रुप की मैं बात करता हूँ, इसमें वी वर लकी टू हैव 1 MRCP इन मेडिसिन एज ए स्टूडेंट। मतलब MRCP करके फिर एक ये जो लइये से आ रहे थे, ये सर्जन साहब FCPS थे। सो ऑलरेडी अपने अपने प्रोफेशन में अपने एक स्टैंडिंग हासिल कर सकते, मेजर डिग्री ले ली भी है उन्होंने, लेकिन स्टिल दे वांट कि हॉस्पिटल्स को लर्न करने के लिए उनको सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बगैर नहीं वो कर सकते। तो वो इस तरह अफादियत उसकी महसूस की जा रही है। इसलिए अभी फिर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, नर्सेज भी आ जाती हैं, इवन टेक्नीशियंस आ जाते हैं, डेंटल सर्जन्स आ रहे हैं। ये सारे मिक्सचर हमारे पास आते हैं ताकि वो अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सीखें। तो ये चूंकि इमर्जिंग स्पेशलिटी है, इसमें भी अभी और एवेन्यूज खुलेंगे, जिस तरह मैंने बताया। अच्छा, अब ये चूंकि मास्टर्स लेवल की हमारा सेकंड स्टेप जो है, इस वक्त तो हम अभी प्रोफेशनल डिप्लोमास तक ही रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेज में यूसीपी के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वी वुड लाइक टू चेंज इनटू मास्टर्स लेवल। हम तकरीबन इसका ड्यूरेशन जो है वी वांट टू एक्सटेंड इट टू अबाउट 2 years और मे बी 1.5 साल काम कर लें, ताकि वो मास्टर जिसकी मार्केट में वर्थ ज्यादा हो डिग्री की, और लोग चाहते भी हैं करने के लिए। तो ये हम अगली स्टेप में इंशाल्लाह इसको प्लान करेंगे, और मेरा ख्याल है कि चीजें इंशाल्लाह यूसीपी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। यूसीपी चूंकि अभी इज एंटरिंग इनटू द हेल्थ, और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है, तो इंशाल्लाह इसमें से हमें राहें खुलेंगी। और जिस तरह हम बहुत टॉप लेवल हमने इसमें रिटायर्ड लोगों को शामिल किया है, हमारी जो फैकल्टी है उसमें बड़े क्लीन एंड नीट पीपल हैं जो कमिटेड हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। एंड आई होप कि यहाँ से लोग जो हैं वो अच्छा कुछ नॉलेज जो है गेन करके जाएंगे, एक्सपीरियंस स्किल्स सीखेंगे, और होपफुली दे विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। Inshallah, sir, very rightly said. What I would just want to conclude is that we take that as an honor that yes, University of Central Punjab has one of the best infrastructures available throughout Punjab, and we have various educational groups. We have schools, we have universities, we have colleges as well. So thank you for that. One last question I would like to ask before we, just consume this webinar is that what is the importance of hospital management during this period of infectious diseases? Like, does this help the managers of manage infectious and prevent the diseases which are contagious? If Dr. Shehzad Saleem can answer that, please. Ji. Inshallah, now in addition to hospital management, Ihsas is collaborating with UCP to start this diploma in prevention, control and management of infectious diseases. Basically, this diploma will provide the students with an in-depth understanding of the outbreak management, especially in cases of epidemics and pandemics management. और इस वक्त कोविड की सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अहम होगा इन्फेक्शन कंट्रोल का डिप्लोमा। और जहाँ तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स की बात है, तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो FCPS हैं और हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो ये इस डिप्लोमे की अफादियत से वो हॉस्पिटल्स में मैनेजर और MS की पोजीशंस हासिल कर रहे हैं, और ये उनके लिए काफ़ी
फ़ायदे का सबब बन रहा है और इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिप्लोमा में भी लोग काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उनके लिए काफ़ी अहम है। थैंक यू। मैं एक चीज़ ऐड मैं एक सर। चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा सर। कि हमारी जो पंजाब की जो लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है ना, अगर हम सारे उसको पढ़ लें, ये जितना भी हमने डिस्कस किया है, आप यकीन करें हर चीज उसमें दी गई है, लेकिन शायद पॉलिसी बनाने वालों को भी पता नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। मुझे चूंकि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने टॉपिक्स दिए थे, पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग और PC1 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने जितनी पॉलिसीज थी सारी पॉलिसीज मैंने पढ़ी। जो लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी ऑफ पंजाब है, आप यकीन करें उसमें हर चीज दी गई है कि हमने एक्चुअली करना क्या है। अगर हम अपने कोर्स को उसके ऊपर ही बेस करें, यानी हर किस्म की चीज, आप भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस पॉलिसी को आप पढ़िए। अगर हम उसको ही फॉलो कर लेते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट एज सच, तो हमारा कोर्स कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बिफोर कंक्लूडिंग दिस, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस की ये काविश है एहसास एसोसिएट के साथ, और वी आर ट्राइंग टू प्रमोट वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर पॉसिबल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, looking forward to the dire condition of after the COVID-19 and in the shape of Omicron. I wish all the doctors and the medical forces around who are taking care of the people all across the globe, not only in Pakistan, healthcare professionals, if anywhere in the globe, we pray for them that they keep safe and they keep healthy, so that they can improve the health standards of our patients and our hospitals as well. I would like to thank Dr. Zafar for helping us out in collaboration with University of Central Punjab Center for Professional Excellence and Ihsas Associates to spread awareness. The first message that we are giving is that we need to manage our hospitals, we need to manage our healthcare service providers, and we need to train our managers as well. And lastly, we had the company of Dr. Shahzad Ali Khan. We thank them very much. Dr. Zia Ullah, you've been an inspiration to the public health, as you've written and given so much to the nation by writing these books with respect to the actions and the situations in Pakistan. And Dr. Azam, thank you so much. Dr. Sabahat, thank you so much for participating in our webinar. Dr. Zafar, if you would like to conclude it, it's over to you. Thank you so much. Thank you very much. मैं सबसे जिनका आपने जिक्र भी किया, डॉक्टर शहजाद अली खान का, डॉक्टर जिया का, डॉक्टर शहजाद सलीम का, डॉक्टर आजम युद्दीन का, और जो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर सबाहत ने ज्वाइन किया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ ihsas एसोसिएट्स की तरफ से भी। गुजारिश ये है कि हमें पहले पब्लिक हेल्थ मैनेजर के तौर पे ऊपर या हॉस्पिटल मैनेजर के तौर पे हमें ये, डॉक्टर शहजाद मेरे से एग्री करेंगे इस बात का, कि बड़ा दुख होता है जब हम हेल्थ के इंडिकेटर्स पाकिस्तान के देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं विद सराउंडिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, लाइक श्रीलंका, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। और हमने अपने इंडिविजुअली तो अपने तौर पे जितनी भी थी हमने एक्सपर्टीज उसमें अपने आप को किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं या हमारे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है या हमारी ट्रेनिंग को फॉल्ट है, ताकि हमें जब हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाके जब पाकिस्तान के हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं तो हमें बड़ी वाकई शर्म आती है कि बांग्लादेश का कितनी इम्प्रूव कर गया। तो इसमें जो देयर आर ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड इट, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम ये जो अब कुछ लोग रिटायर हुए हैं जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो अगली जनरेशन को इम्पार्ट करें,
ताकि अच्छे मैनेजर्स डेवलप हों, वो अपने अपने जिस तरह भी, चाहे वो हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पब्लिक हेल्थ साइड पे हेड कर रहे हैं, चाहे वो सीईओ के तौर पे जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ के तौर पे जाते हैं, प्रिवेंटिव साइड पे जाते हैं, वो कुछ सिस्टम्स को बेहतर, ऐसे कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच के कुछ चीज़ों को बेहतर करें ताकि आउटकम बेहतर हो, ताकि हमारी जो नेशन है उसके हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करें। मैं दोबारा आप सबका और फिर स्पेशली माय थैंक्स टू यूसीपी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अस, एंड आई होप के इंशाल्लाह इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे और इसको अपने जो एक शुरू में हमने काम सिर्फ 2 डिप्लोमा से स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू लॉन्च इट इनटू अदर सिटीज एज वेल, और अपना इसमें 2 से भी हम बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह टीम बड़ी स्ट्रांग है और हम इसको फुली यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली extremely grateful. Thank you. Thank you so much. Before leaving, I would just like to tell that this diploma is going to start on February 12th. And we have extended the last date of registration till 25th of February. So anyone who's watching us and have seen our guest panel talk about the importance of hospital management in Pakistan, they can sign up on our website. That's www.cpe.ucp.edu.pk. My name is Amir Khilji. I'm the external manager for trainings, and we are signing off. Allah Hafiz, and thank you very much for all the valued guests.